stream is running, so I need to fucking post this on my socials. Worst possible time. Here's the thing about this. Right, good morning, good afternoon, good evening, people. Just give me 2 seconds. I need to post these links on my socials and all that, you know. That is fucking corny, that is, but just give me 2 minutes. This is fucking frying me, this. Right, there we go. It's just only me watching at the moment. Copy link. Oh shit. Wait, somebody's watching. That's good. Right, so right, let me just post this on my fucking socials. Just give me 2 minutes, guys. If anyone's watching, that is. I don't think anyone's watching at the moment, but let me see. Uh, Let's talk about FOMO. You see a cat. right, there we go. That's it's up on my fucking YouTube. Just give me 2 minutes for my WhatsApp. Yep, I am fucking posting these on WhatsApp, bro. Don't judge me, please. Get this done. Right, there we go. And see if anyone's watching me. Just give me 2 seconds. Imagine someone is watching me. I'm such a fucking dickhead, you know. Imagine someone's leaving some comments and all that. Oh. Yeah, but I don't think anyone's watching, isn't it? It is streaming, isn't it? Why is it fucking yeah, this one? Just give me 2 minutes, people, for all those who are watching. I was actually supposed to start streaming at fucking 1:30, but I was seeing this nice setup. I was like, do you know what? Let me try and pop in it right now, because yeah, I've already put in a position and all that, you know. Fuck it, we bow straight up. Right, so that is happening. There we go. So that's right. Let me see if anyone's watching. I don't think anyone's watching apart from me. I don't think anyone's watching at home. But let me see. Right, so there we go.
not the pre-op stories off. Piss off. Right. So, people, the thing is that wait, let me just mute my notifications and all that. You know, I don't want fucking mute the people. And there we go. Right. So the links are up. I've done Instagram. I've done fucking WhatsApp. Okay, that should be fine. Right. So we've got this position coming in. I've already traded, lads. I've already traded. Right, I've already put this position in. So this was me putting this position in. I was supposed to start streaming like literally after 4 minutes, but I saw this set of form and I was like, do you know what? Let me just pop in and let me try streaming a bit earlier, because this on a 30-minute time frame, this is a very nice impulse entry to the downside, right? But in case we don't see any of the trades afterwards, I am going to go over how you can start trading if you've never traded before. Do you know what I mean? So yeah, so I mean, let's see what happens. Let's see what happens, isn't it? This is not right. Let me put this here. This makes sense, you know. This makes sense, right? So let's see where this gets us, and afterwards we can try. I don't know. We can try put in some position in afterwards. If not, that is totally fine. I will go over how you can start trading if you've never traded before, right? This is a bit lanky, I can't lie, the streaming thing and all that, you know. I need to start streaming on fucking Kick, right? I've made an account. I'm trying to, I don't know, I'm gonna take a look into this afterwards, after the stream, right? Because the blues on old and all that. I'm not gonna pay them right now. Oh, look at that already, fucking, wow. Amazing. Right, so that is good, you know, it's good. Already almost there, man. But if it, so now we can put our stop loss like here, like right here or something. Let me take a look at the 15-minute time frame. Yeah, it's just gonna put the stop loss a break even at least, at the very least. But I'm just gonna leave this here for now, just for, you know, taking pictures and all that. But look at this. This is straightforward, right? This is straightforward. Basically, yeah, this is, we had a rejection from this resistance, then we had the next candle forming. Right, wait. Let me see if there's people joining and all that. Right, so basically, yeah, we had this resistant here. We had this candle rejecting. The next candle formed bearish, and the one right after fucking broke the low, and there we are, fucking, you know, smashed it, totally smashed it, right? So this is exactly what I'm looking for when it comes to entries and, you know, fucking trading and all that. And if I see volume dying or something like that, I'm gonna, you know, exit straight up. I'm gonna exit. I'm not gonna try to fucking, you know, grab the whole move or something. This is basically, yeah, this could have been like here, but I'm just taking this chunk off, right? In fact, you could, if this smashes this, you could possibly take 50% off, and then you could try waiting for the next candle to fill the whole range, right? But I'm not going to do that. I'm not going to be greedy. If this smashes this, good enough. If it goes back, I close like right here, right? If it comes back like right here, let me fucking type this in. By the way, I'm fasting today, people. I'm fasting. Fasting is key, my friends. Right, so nah, that's not quite enough now, is it? There we go. Close. No shit. Close 50%. Right? In fact, it comes here, right?
it could be a bit of a rejection, right? Because the candle is forming slightly. It doesn't have the same volume as the previous one, so there could be some problems with that. I'm gonna, you could possibly take profits now. This is what fucking. Oh fuck! This is fucking 77 pips. Bro, look at that! Smashed it, bro. Straight up smashed it. Amazing, amazing. That's how you do it. Straight up smashed it. Look at that. Fucking tanking. Gold is tanking at the moment. Whoa. Okay, that was not expected. That is mental, bro. The hell? Let me try. I need to post this on my story first. Right, this is just mental. This is just mental. This is straight up back-to-back wins. You know, let me try recording a video for my fucking Instagram story and all that. Damn, man. Yes, yes, damn indeed, bro. Look at that, bro. Straight up, 15 minutes. Not even fucking 12 minutes and profit already smashed. Right, that's good. So we could have see now the thing is we could have aimed for here, right? So that would have been like 110 pips or something. No, 130 pips. Right. So we could have done that, but you would. I've been trading for a while, and you would prefer sticking to your, I don't know, fucking daily percentage and then just moving on. You don't want to grab the whole move. That is something you certainly don't want to do. Right, right, fucking back-to-back wins, bro. Amazing, amazing, amazing. This is how we do it, bro. This is how we do it. Amazing. Absolutely amazing, bro. Right, I need to post this on my fucking Instagram, bro. That's what I need to post it on my Instagram. Smashed it straight up, bro. That's well, fucking Packy me, bro. Right, let me try and sort in my fucking Instagram out. Give me 2 minutes. Right, just mental, bro. Amazing, amazing. Right, so not even fucking 15 minutes, I think. But you get the idea. I mean, if it is 15 minutes, but you get the idea. You know what I mean? Mental, bro. Look at this fucking. I think 140 pips. 140 pips, isn't it? Yeah, almost 140 pips. Amazing, bro. Amazing, amazing. We like that. We like money. We like money. That's what it is.
Amazing, amazing. Right, so we could have, like I said, we could have aimed for here. But then again, you don't want to risk your fucking money. Do you know what I mean? Just grab your portion for the day. You're done. Move on. I'm not gonna sit on the charts for fucking 3 to 5 hours. 4 to 5 hours. Sorry, but you get the idea. I'm not gonna sit on the charts for the four to 5 hours just trying to find a move and trading like 5 to 6 times a day. No, one trade, maximum two, three if you're really being an idiot. But that's really pushing it. Do you know what I mean? Whoa, what is that, bro? What the fuck? Wait, 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 wait. That is 200 pips. 230 pips. यार क्या हो रहा है यहाँ पे bruv? Oh my god, the money I could have made. The money I could have made, man. The money I could have made. Wow. But anyways, that is just mental, bro. That's some that is mental. Right, 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 right. That is just mental, bro. Right, so I think the rest of the stream will be just me trying to go over. Oh, look at you, Bilal is here. Right, so coming to the main point, I would say is I talked to Bilal yesterday and a few of the guys, and we were talking about trying to learn how to trade in the first place. Do you know what I mean? So I've already got a setup. I've already got a few counts, but some people they've no idea how to trade in the first place. Do you know what I mean? So I'm gonna, since I've already made some money, I don't need to worry about trading for the rest of the stream. So what I'm gonna focus on is how to make an account so you can trade. Right? Let me open my PowerPoint up. Right? Welcome to the stream, Bilal. Welcome to the stream. Okay, as promised, I will deliver. Okay, inshallah. Right? Because I told Bilal that I'm gonna watch the fucking um, the market, and afterwards, let's see if we can try and get in some trades in, and maybe learn how to trade. So right. So how to set up your account for account for trading. Right. How to trade, bro. How to trade. Straightforward. You know what I mean? Straightforward. How to trade. How to trade. You know what I mean? Right. Guess I'm late. No, it's totally fine. Do you know what it is? I was trying to stream at half 1 UK time, right? But I saw this amazing setup forming. Wait, let me show you. So I saw this amazing setup forming, right? 15-minute time frame. We had a bearish candle form. The next candle broke the low. And I was like, do you know what? I'm just gonna jump in straight up. No point in me waiting. But yeah. I mean, you can see it was an amazing setup. So here we are. I don't think I'm going to be trading anymore, but if I do see a nice setup, I will let you know. Do you know what I mean? I will let you know. Right. So let me just post this on my Instagram. I'm going to be teaching you a lot how to trade. Perfectly on time. No, just not to continue recording. Okay, fuck off. It's fine. Right. So I need to sort this fucking disk space out, but at least we've traded, so I don't mind. Uh, disk space or anything. Right. So that's sorted out. Now what I want to do is just give me 2 minutes to post a story on my Instagram and all my socials, and I'll come back to you. Okay, just give me 2 minutes. Let me put this here.
Right, not even fucking 15 minutes in, and look at that, bro. Amazing. So now I'm just going to be teaching you lot how to trade. Do you know what I mean? Because I've already done my trade for the day. Right, but just give me 2 minutes, okay? Just 2 minutes, boy. So now I'm just going to be right, I've recorded the video, just give me 2 minutes. Bet. Just give me 2 minutes. I need to do, I need to do my advertising, do you know what I mean? I don't have no marketing agency working for me or something. Do it myself. So now I'm just going to be teaching you how to trade. You know what I mean? Because I've already done my trade today. Right, not even fucking 15 minutes in, and look at that. Amazing. So now I'm just going to be teaching you how to trade. You know what I mean? Because I've already done my trade today. Right, not even fucking 15 minutes in, and look at that. Amazing. So now I'm just going to be teaching you how to trade. You know what I mean? Because I've already done my trade today. Right, not even fucking 15 minutes in, and look at that. Amazing. So now I'm just going to be teaching you how to trade. You know what I mean? Because I've already done my trade today. Right, not even fucking 15 minutes. Just give me 2 minutes. Right. Wow, these socials are these are tiring, bro. I can't lie. Because I'm literally trying to sort these out simultaneously. I'm fucking sorting this one out. Bilal, you still watching? I don't know. 15 minutes in. Right, so how to trade. Right, not even fucking 15 minutes in, and look at that. Amazing. So now I'm just going to be teaching you how to trade. You know what I mean? I've already done my trade today. Right, not even fucking 15 minutes in, and look at that. Amazing. That is working out. Let me just put this on my fucking WhatsApp. Right, but I need to try sorting out Twitch. Kick, my bad, not Twitch. Right, okay. How to trade. Let me get in a new slide. This is going to be corny, but fuck it, Weeball, man. Weeball. Wow, this is nice. Start here in 1 minute. Let me see how this is going. Right. So I'll do a quick analysis of this, and then we're going to move on to the how to trade session, right? So let me go to the daily time frame. Actually, in fact, you know what, Bilal, tell me how you want this done, right? Because essentially I'm just doing this for you, do you know what I mean? And if anyone else is watching. Tika, I can show you how to trade, like literally how to trade when you look at the charts, and then I can show you how to set up your accounts, right? Either I can do that, or today I can just show you how to trade, like literally when you open the charts and fucking, look at the time frames and all that. And tomorrow when I stream, I can show you how to set up your accounts. Okay, is that fine? Just let me know. If that's fine, then we can try, working on it. We can try doing
a nice little analysis session where I show you how to trade. Why is my story taking so long? It is taking long, man. It is taking long. Bro, imagine if I held my position, I would have made money, bro. I would have made proper money if I held my position. It is what it is. We take time. We take time. Everything takes time, my friends. Right? So why is it taking so long? I get the job done. Just let me know, Bilal, if you're still watching. If you're still watching, you know. If you're not watching, it means a lot. But how about we soften the suckers out? Barely know anything, so we go anything. Right. Right. So I think personally, right, if you ask me, today we could learn how to trade, like literally, if you open the charts up and if you try seeing what happens, you know. Let me just clear this up. So you know, when you open the charts and you're looking at the charts and you're like, bro, what the fuck is happening here? You know, let's work on that first. Let's try to see what you're looking for, what you're essentially looking for when you open the charts, and then afterwards we can try understanding how to set up your accounts. Is that fine? I think that should be fine, right? So we're going to do that. I'll show you how we trade. I mean, when you open the charts, how you trade, what page you're looking at. You know, me personally, I trade gold, right? XAUSD is gold, okay, gold. So I trade gold, and yeah. So essentially, I'm going to teach you what you're looking for when you open the charts up, the daily time frame and all the time frames, and essentially what to avoid, right? So I'm going to be teaching you all that stuff, if that's fine with you, right? So let's get into that. Let me just make sure my story is uploaded so I can move on with my shit. Oh, I've got personal hotspot on. Oh, that's fine. Right, that's why my internet was fucking slow as fuck, man. Right, anyways. Uh, why is this not working, bro? This is taking time. Right, let me just see what you've said. Because to be honest, I can't right now look at the gonna either. Yeah, I know. Trust me, I've been there. You know, I've been at that point, and let me tell you, it's easy, my friend. It's easy. It just depends on. Wait, let me just sort this fucking piece of shit out. Right. So it just depends on how long you've been in the markets for. Do you know what I mean? If you look at the time frames, and if you look at these, these are called symbols, right? Pairs, symbols of pairs. Raja Banks is the one I learned from. Do you know what I mean? Wait, let me just. So people, oh wow, I butchered, I butchered English. Me, wait, right. So people, you can wait. How should I frame this? Time for Doha as well, right? Raja Banks, right? My favorite trader is Raja Banks, right? I learned from Raja Banks. He is the goat. This guy is the goat, my friend. Raja Banks is the best when it comes to trading, right? So I use Raja Banks strategy, right, which is essentially just how do you insert a fucking text box, right? So just support and resistance, right? Basic, basic concept. You know, if you hop into trading, right? There's there's shit like ICT and the RSI and fucking Bollinger Bands and all that bullshit. You know, avoid that. Just focus on support and resistance because it's very straightforward. Okay, it's very straightforward. It's easy. Support and resistance is fucking easy. You know. So I've sorted this out. Let me just. Right, there we go. My story's finally uploading. Just give me 2 minutes. 15 minutes in, look at that. Amazing. So now I'm just going to be
teaching you know how to trade. You know what I mean? Because I've already done the trade for it. Right. So अच्छा बिलाल इतनी समझ आई है बेसिकली जो है support resistance इसके अलावा you've got ICT, right? You've got ICT, you've got RSI. Fucking I mean RSI is it's a indicator, you know, so it's not really ICT and SMC and all that bullshit, bro. ICT and SMC is bullshit. It does not, for me, it hasn't worked. It does work for some people, right? It does work for some people, but it's, so these are basically strategies, right? Support and resistance is a strategy. ICT and SMC, it's a strategy. Okay? We are going to be focusing on basic support and resistance. Okay? Oh shit. Oh, news. Right, something is going to happen. Right, anyways, we're going to be focusing on support and resistance. Okay? So ICT and SMC, don't even think about that bullshit. Okay? Support and resistance is basically, do we have pad? Wait, what's it called? Fucking, it's not paint now, is it? Is it paint? Could be paint. Oh, right. Let me just go here. So, yeah, about support and resistance. Right, there we go. So we have a say for example, you got this candle, right? This candle forming. There we go. Let me do this. The candle is fucking opacity is proper. We've got a red candle forming. That is not red. That is red. Right? You've got a red candle forming. Whatever the fuck that is. And you've got this, right? This is a bearish candle. Bearish candle means कि basically नीचे गई है, ठीक है? यहाँ पे start हुई थी, यहाँ पे गई है, ठीक है? These wicks, इनका मतलब ये है कि this candle, when this candle opened, it tried going up, then it came back down, came here, went back up and closed here, right? That's basically, that's what it means, right? These wicks and all that bullshit, that's what it means, right? Then you've got these candles, right? You've got these candles, and these are basically, let me just do this. And these are bullish candles, right? So bullish candle is literally the opposite. They open at the bottom, they close at the top, right? Hence the name bullish candle, which means bullish means up. Wait, let me write this down for you so it's easy for you, right? Bullish candle. Right, this might be a long session, you know, I can't lie, but hey, I'm having fun, you know, so if it is what it is. This is a bullish candle, this is a bearish candle, right? Bearish candle, there we go. So you've got these candles, right? Let me write bearish candle, isn't it? How do you fucking, there we go. Right, so that right there is bearish candle for you. You can take down your notepads and all that if you want to take some notes, right? But so this bearish candle opens at the top, closes at the bottom. Bullish, literally the opposite, opens at the bottom, closes at the top, right? So that's what it is for candles basically, right? Then you've got many types of candles and you know, all sorts of candles. This is like what's it called? A basic template, you know. This is a very general way to look at it, but then you know you've got all these sorts of candles, right? So for example, if I look at let's say here, right? We're looking at this region right here. Oh fuck me, nothing. Right, we're looking at this region right here, right? अभी तक समझ आ रही है या फिर any questions? कोई questions हैं या फिर अभी तक मतलब क्या सीन है? Just let me know, ठीक है? Remember, there's a problem with the internet, so I don't really see responses on time. So बस message कर दो मैं पढ़ लूँगा, ठीक है? But I'll continue till then.
बेसिकली ठीक है, जो फॉर एग्जांपल ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल इस पॉइंट पे ओपन हुई है, फिर थोड़ी सी नीचे गई है, वापस ऊपर इधर तक आई है, फिर इधर आके क्लोज हुई है, ठीक है. So this is basically all that means. These wicks represent basically the pathway these candles took before closing, right? After opening and before closing. So during that time being, whatever moves that candle made is represented by the wicks and the body, right? Or yeah, so that's basically what wicks and bodies mean, right? ये candle जो है इस पॉइंट पे खुली है, ठीक है, नीचे गई होगी, ऊपर गई होगी, लेकिन आज आके तकरीबन वहां पे क्लोज हुई है, ठीक है. बाय द वे इस कैंडल को कहते हैं डोजी कैंडल, ठीक है, DOJI, ठीक है, दीज आर कॉल्ड डोजी कैंडल्स, ठीक है, डोजी कैंडल्स, ठीक है. 12 ये डोजी कैंडल्स होती हैं, ठीक है. बेसिकली वो कैंडल्स जो कि जहाँ पे खुलती हैं वहां पे ही क्लोज होती हैं. Probably getting to it, right? That's good. So then we have candles like these. This candle opened at this point. It never went down. It just kept on going up. ठीक है, इधर तक आई, फिर थोड़ा सा नीचे क्लोज होगी, लेकिन ओवरऑल बुलिश थी, ठीक है, ओवरऑल बुलिश थी, ठीक है. अब सिमिलरली अब ये शायद क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे ये गैप्स वगैरह, ठीक है, ये बस मार्केट जो रेट में चेंज आते हैं उस वजह से थोड़े बहुत गैप्स बन जाते हैं, ठीक है, स्पेशली इसलिए क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम है. अब अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाऊँ तो गैप्स यूजली फ्रीक्वेंट नहीं होते, लेकिन जब होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं. जैसे कि ये देखो कितना बड़ा गैप है, लेकिन अब जब आप जूम इन करेंगे तो काफ़ी यूनिफॉर्म है. मतलब यहाँ पर ये क्लोज हुई है, वहाँ पर ये ओपन हुई है, ये यहाँ पर क्लोज हुई है, अगली यहाँ पर ये ओपन हुई है. मतलब जहाँ पे भी एक कैंडल क्लोज होगी ना, अगली वहाँ से ही ओपन होगी, अनलेस मार्केट रेट्स में कोई डिफरेंस आया, सब्सटैंशियल डिफरेंस, ठीक है. तो ये बेसिकली मतलब प्राइस एक्शन, नॉर्मल प्राइस एक्शन ही है. आप जब भी ट्रेड करते हैं आपने अंडरस्टैंड करना है कि कैंडल क्या कर रही है, ठीक है. ये जो मूवमेंट है कैंडल की, बेसिकली सब मतलब क्या है, ठीक है. अब ये कैंडल यहाँ पर आई है, ठीक है, मैंने यहाँ पर ट्रेड की थी. मेरी ट्रेड जो थी आज वो ये थी ऐसे. समझ आ रही है, ठीक है, नाइस. तो मेरी ट्रेड आज बेसिकली ये थी, ठीक है. अब ये मैं बताता हूँ मैंने क्यों ली थी, लेकिन बहरहाल आपको कैंडल्स का समझ आ गया, ठीक है. कोई क्वेश्चन हुआ मुझे मतलब लिख देना है, ठीक है, मुझे ऑन द पॉइंट नहीं पता चलेगा क्योंकि थोड़ा सा इंटरनेट में मसला है. लेकिन बहरहाल अब मैं आपको बताता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, ठीक है. सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, राजा बैंक्स की स्ट्रेटजी, स्ट्रेट फॉरवर्ड. सपोर्ट जब भी एक बेरिश कैंडल फॉर्म होती है, ठीक है, एक बेरिश कैंडल फॉर्म हुई और उसके साथ ही एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुई, बुलिश कैंडल फॉर्म हुई, ये जो लेवल है ना, ये सपोर्ट है, ठीक है. दिस इज सपोर्ट, ठीक है. ये जोन जो है, ठीक है, एक लेवल नहीं होता है, एक जोन जो होता है वो सपोर्ट होती है इस एरिया के अराउंड, ठीक है. ये प्राइस नहीं, जैसे देखो यहाँ पे प्राइस ये यहाँ पर आ रही है, ठीक है. हमें ये नहीं कह सकता कि 4578 जो है एक बहुत अच्छी सपोर्ट है, ये नहीं मैं कह सकता. मैं कहता हूँ कि ये जोन जो है ये अच्छी सपोर्ट है, मतलब यहाँ से कोई रिजेक्शन आई, अब ये नहीं पता किस प्राइस पे, किस एग्जैक्ट लेवल पे, लेकिन कोई आई है रिजेक्शन, ठीक है. बेसिकली इसका ये मतलब है, ठीक है. सो दैट्स बेसिकली व्हाट्स हैपनिंग हियर, ठीक है. और लिटरली द ऑपोजिट. So say for example if this is happening, so if a bullish candle forms and a bearish candle forms, this zone right here is resistance, right? This is resistance. And say let me do this again. If you got this, right, this right here is support, right? Okay, so I'll just write this down for you. Support,
ठीक है, दिस इज काइंड ऑफ मेसी, आई कांट लाई, दिस इज, लेकिन यू नो जिस तरह से काम चल रहा है, yeah bro, canvas right, so that's good. So बेसिकली आपकी रेजिस्टेंस और सपोर्ट ये है। अब मैं बेसिकली बताऊं कि ये कहाँ पे शुरू है और कहाँ पे खत्म हुआ है, वो ये है कि दिस कैनल स्टार्टेड हियर एट दिस पॉइंट, ठीक है, यहाँ तक गई है, यहाँ पे क्लोज हुई है, द नेक्स्ट कैनल ओपन हियर, वेंट हियर, बंद हुई, यहाँ पे अगली शुरू हुई, यहाँ पे गई, बंद हुई, ठीक है। तो बेसिकली मूवमेंट क्या आई है, लेट मी यूज व्हाट्स इट कॉल्ड, किधर है, किधर चली गई है, just give me 2 minutes bro, I'm fucking, oh इधर ही। तो बेसिकली कैंडल ऐसे गई है, वापस नीचे आई है, तो दोबारा ऊपर गई है, ठीक है। मैंने बहुत बुरा बनाया है लेकिन इस तरह गई है, इधर आई है, फिर इधर गई है, बेसिकली ये मूवमेंट थी, ठीक है। पहले गई है ऊपर, ओह शिट, अच्छा, पहले ऊपर गई है, फिर वापस नीचे आई है, फिर वापस ऊपर गई है, ठीक है। बेसिकली ये यहाँ पर हुआ है, ठीक है। 12 समझ आई? I hope you understand it, you know. I hope you understand it. Let me just take a look at the fucking Instagram. ठीक हो गया? चल रहा, nice one bro. Right, ठीक हो गया। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ आ गया आपको, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करूँ, ठीक है, मुझे ये बता देना। बहरहाल अब ट्रेड कैसे करते हैं, ठीक है, बेसिक जोन्स में ट्रेड कैसे करते हैं, अब किस चीज़, बेसिकली किस चीज़ को ढूंढ रहे हैं, ठीक है। बेहतर ये कि मैं यहाँ पर कोई ढूंढूं लेवल ऐसा, बल्कि नहीं, ज़्यादा ज़रूरी चीज़ तो बिलाल, सबसे ज़रूरी चीज़, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग व्हेन टू ट्रेड, ठीक है, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग व्हेन टू ट्रेड, ट्रेड कब करना है, ठीक है। ये नहीं बस जब भी दिल किया तो चार्ट खोल दिया तो हाँ जी ये ट्रेड गई तो बस सीधा, नहीं नहीं, ऐसे नहीं ट्रेड करना। ट्रेडिंग के स्पेसिफिक टाइम फ्रेम्स हैं, ठीक है। अब UTC+1 जो है ना, ये यूके टाइम है, ठीक है, बेसिकली यूके टाइम है, ठीक है। UTC जो स्टैंडर्ड टाइम है वो घंटा पीछे है, तो अभी अभी बेसिकली जो है ना न्यूयॉर्क सेशन का ओपन हुआ, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से सेशंस हैं। सेशंस यू मे ट्रेड, ठीक है। अब सेशंस बहुत ज़्यादा हैं, कैसे कैसे करूँ मैं इसको, अच्छा बारह, चलो ये किधर गया वो, कर सकता हूँ मैं, राइट, बारह, ठीक है। एशियन सेशन, ठीक है, पहली ऑप्शन, डिसेंट ऑप्शन है बहुत, कोई ओवर द टॉप अमेजिंग ऑप्शन नहीं है। फ्री लंदन सेशन, आपको समझ आ रही है, ठीक है। फ्री लंदन सेशन, कोई कोई क्वेश्चन हुआ है, बस लिख देना, ठीक है, जस्ट जॉट इट डाउन, डोंट वरी अबाउट मी हैंगिंग आउट फॉर यू, ठीक है। फ्री लंदन सेशन, then you have the London session, you got the free New York session, New York session, इनफैक्ट मैं यहाँ पे ओपन लिखता हूँ क्योंकि दिस इज अ वेरी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, ठीक है। ओपन लंदन क्लोज, राइट, ये जो टाइम फ्रेम्स है ना, इन टाइम फ्रेम्स में आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अब अपने टाइम जोन के हिसाब से, इफ यू वांट टू सी you know exactly what time it is when these sessions open and close, what I would suggest is, oh look at that bro, amazing, anyways,
baby pips, right? Forex market hours. Just search this online, ठीक है? And then you'll get this chart. और ये आपको बताता है कि बेसिकली कौन सा टाइम जोन है आपका. मेरा लंदन टाइम जोन है, ठीक है? अगर तो एक्सेप्ट तो बेसिकली ये आपको बताएगा. लो जी, दराज भी आ गया. बेसिकली आपको बताएगा किस टाइम जोन में आप कौन से ओपन के सामने, मतलब कौन से ओपन चल रहे हैं, कौन से सेशंस चल रहे हैं, कौन से क्लोजेस चल रहे हैं, ये सब कुछ आपके सामने होगा, ठीक है? तो बेबी पिप्स आप यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ के लिए. जैसे लंदन में फॉर एग्जांपल एग्जैक्टली ऑन द डॉट 8 AM लंदन सेशन ओपन होता है. लंदन में हमेशा 8 AM पे ही होता है ओपन, ठीक है? न्यूयॉर्क सेशन डिपेंड करता है कि टाइम जोन कैसे चेंज हो रहा है. करंटली 1 PM न्यूयॉर्क का ओपन टाइम है, न्यूयॉर्क सेशन का ओपन टाइम, ठीक है? न्यूयॉर्क में एग्जैक्टली जब 8 AM होता है तभी सेशन ओपन होता है. तो मार्केट, यप एग्जैक्टली, ठीक है? एग्जैक्टली जब टोक्यो सेशन ओपन होता है ना, तो टोक्यो में 9 AM होते हैं, ठीक है? टोक्यो में टाइम 9 AM है. When the Tokyo session opens, the time in Tokyo is 9 AM. When the London session opens, the time in London is 8 AM. When the New York session opens, the time in New York is 8 AM. और जब सिडनी सेशन ओपन होता है तो 9 AM. बस सिडनी और टोक्यो का थोड़ा सा डिफरेंट है कि वहाँ पर 9 AM उनके अपने रिस्पेक्टिव सेशंस जो है ओपन होते हैं. लेकिन बाकी जो सेशंस हैं, जो लंदन और न्यूयॉर्क सेशन है, जो कि पर्सनल फेवरेट सेशंस है मेरे, वो 8 AM पे ही ओपन होते हैं, ठीक है? These sessions they always open at 8 AM, ठीक है? लंदन न्यूयॉर्क का है, ठीक है? तो आप इन सेशंस को ट्रेड कर सकते हैं और एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में, वो भी मैं बताता हूँ. फॉर एग्जांपल, और ये मैं बात कर रहा हूँ UTC प्लस टाइम, ठीक है? UTC प्लस वन टाइम, जो कि है लंदन टाइम, ठीक है? UK टाइम, बेसिकली UK टाइम, ठीक है? एशियन सेशन का मैं इतना नहीं कहूँगा क्योंकि वो आपके लिए भी ट्रेड करना काफ़ी मुश्किल होगा, ठीक है? तो उसको कह लो निकाल देते हैं यहाँ से, ठीक है? अब पाकिस्तान में क्या रहते हैं, ठीक है? पाकिस्तान के मुताबिक ठीक है, अगर आपने फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी जाना है, यूनिवर्सिटी से आप फारिग होंगे तकरीबन 3-4 बजे, ठीक है? अब बेस्ट सेशन आपके लिए, अगर आप मुझसे पूछते हैं, वो लंदन और न्यूयॉर्क सेशन है, ठीक है? अब इनमें से आपने एक ही पिक करना है. ये नहीं कि आपने दोनों पिक कर ली कि हाँ मैं लंदन भी ट्रेड करूंगा, मैं न्यूयॉर्क भी ट्रेड करूंगा. देखिए, मैं जो है सिर्फ और सिर्फ न्यूयॉर्क सेशन ट्रेड करता हूँ, ठीक है? क्योंकि मुझे पर्सनली ईजी लगता है ट्रेड करना, ठीक है? पर्सनली मेरी नज़रों में बेहतर सेशन है, ठीक है? लेकिन आपकी अपनी मर्जी, आपने जो सा सेशन ट्रेड करना है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है. तो जब न्यूयॉर्क सेशन होता है तो पाकिस्तान में अप्रॉक्सीमेटली 5 बजे होते हैं, ठीक है? 5, साढ़े 5, 4:30 इतना ही टाइम होता है. डिपेंड करता है, मतलब ईयर राउंड चेंज होता है टाइम, ठीक है? तो डिपेंड्स ऑन दैट. लेकिन आपने, अगर मैं आपको सजेस्ट करूं, आप ट्रेड करो. फक मी ब्रो, काम क्यों नहीं करता ये? There we go. So if I had to suggest to you something, I would personally say trade the New York session because it's the best session, ठीक है? Volume is at peak, ठीक है? Volume is at peak, ठीक? Best volume, best New York session, ठीक है? अब मैं आपको मतलब यहाँ से दिखा भी देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल ये सारा जो है ना, इनफैक्ट मेरे पास ये भी है, देयर वी गो. तो बेसिकली ये जो है ना, ये सारा एनीवेज, बेसिकली ये सारा जो है, ये सारा लंदन सेशन है, ठीक है? न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हो गया है. बस ये जो स्पेसिफिक इंडिकेटर है ना, this only shows me the NYSE open. I don't know why. There's something wrong with the indicator. I don't know for some reason. लेकिन this only shows me the NYSE open, which doesn't make sense. और वो by the way वो है न्यूयॉर्क स्टॉक, क्या कहते हैं उसे, स्टार्ट ऑफ द स्टॉक मार्केट एक्सचेंज, ठीक है?
इट्स द मोस्ट सुटेबल, ठीक है। जो स्टॉक मार्केट एक्सचेंज है ना, उसका जो ओपन है बेसिकली वो टाइम है ये, which is approximately 2:30 p.m. London time, ठीक है। पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, ठीक है। बहरहाल, बेस्ट टाइम टू ट्रेड London, New York. Personal favorite, New York. Though you can stick to the New York session, which is 1 p.m. London time. Pakistan time, I think it's like 4 p.m. or 5 p.m. ठीक है, exactly. लेकिन मैं usually 30 minutes जो है ना सेशन ओपन से पहले ट्रेड करना शुरू करता हूँ, ठीक है। बस पर्सनल प्रेफरेंस है, आगे से आपकी जो मर्जी है, ठीक है। तो अब आपको टाइम जोन की समझ आई है कि आपने कौन से टाइम जोन में ट्रेड करना है या नहीं, मतलब मुझे बता दो आपके आपकी नज़र में कौन सा बेहतर है। और आपको समझ आई है सेशंस की, फिर मैं आगे बताऊँ आप, ठीक है। I'll take a quick 5 minute break, ठीक है। Just let me know. A quick 5 minute, ठीक है, फिर we can continue. ठीक हो गई, yeah, fair enough. I'm telling you, New York session is the best session. It's the best session ever. London session is amazing. I mean, it really depends on the way you trade. Because I've traded London for months, right? I've traded London session for months. But the thing is, sometimes you just don't have enough volume in London session. Do you know what I mean? So that's just what it is. Yeah, yeah. चल रहा निज़ाम चल रहा है. You know. Just give me 5 minutes. Taking a quick 5 minute break. फिर back to the session. I believe next session के लिए मुझे एक proper slide show तैयार करना चाहिए, क्योंकि it wouldn't make sense, you know, it wouldn't make sense अगर मैं slide show के बगैर करूँ, क्योंकि right now मैं बस straight forward जो मेरे ज़हन में आ रहा है मैं वो कर रहा हूँ. Business, to be honest. Yeah, straight up, man. Everyone knows the business. Thank you. I'm trying. I'm trying. Knows the business. Knows the business. I've been trading for fucking I think 2 years at this point. 2 years, almost 2 years, on and off, but almost 2 years, right? But trading is very hard in the sense that it's not straightforward. Okay? People say it's straightforward. Um, how do I put this? On book, it is, right? On paper, it is. It's very straightforward if you really think about it. I mean, you just trying to wait for a candle close and boom, you trade and this and that. But really, I mean, if you trade for months, you will understand it's a very psychological game. It's a very psychological game. Trading is. It takes time. It takes time. You know, it's not easy. No, no, it's never easy, my friends. It's never easy. Just taking my time. ठीक है. और by the way, क्योंकि अभी ब्रेक पे हैं ही हम, तो आपके जहन में है कि आपने कितनी देर कितना मतलब रखना है अपने अकाउंट में, मतलब आप किस अमाउंट से स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, ठीक है। ये आपने सोचा हुआ तो आप मुझे बताएं।
Because we have no other option. Yeah, true, true. Yeah, I mean, we don't need to discuss it, man. Like, it depends on you. You know, if you want to do $10, $20, लेकिन देखो वो पैसे नहीं डालने जो कि you know if you lose that money you're gonna be like, bro, this is a big problem. You know, so don't fucking don't make that mistake. Don't make that mistake because I've done it many times. You know, don't make that mistake. वैसे सिर्फ इस जेन से डालना कि you can lose this. You know, you can lose this. So जुआ नहीं खेल रहे, ठीक है? You're not gambling. You're not looking for overnight returns, overnight profits. You're not gonna be a millionaire by the night. Do you know what I mean? By the evening or something. You know, that's not gonna happen. Right? It's gonna take time. It's gonna take effort and understanding. It's gonna take time. So I do understand that you maybe for starting for the sake then I'll probably go with, yeah. It's totally fine. You know, $10 and $20 is not really long term, right? But for the sake of learning, it's a good amount, you know. And tomorrow, inshallah, kal to Eid hai. Oh, tomorrow is Eid. Okay. I'll let you know if I stream tomorrow, okay? Lekin whenever I stream, be that the day after or Friday or you know even Sunday, depends. But whenever I stream, I will let you know how to make your accounts and how to set up brokers and how to transfer money. I mean, that's when you can be transferring because you know you can. Well, yeah, the thing is like you know you don't want to start with a massive amount and lose all that money. You know, I would say start with a small amount of money, and then you can probably try and build it up from that point onwards. Do you know what I mean? Yeah. So you know, really depends. But I'm not saying that you cannot make money from fucking 20 or $30. You know, sometimes it is very out of line, right? But sometimes I've made hundreds from $20, $30, but then I've lost hundreds. Do you know what I mean? Because really, it's not about the money. It's about the way you make it. You know, अगर आप गैम्बल करके बस अब ऊपर जाएगा, बस अब नीचे जाएगा, अगर आप ये करके बस पैसे बना रहे हैं ना, तो आप उसी तरह से लूज भी करेंगे. ठीक है? It's very straightforward. It's very straightforward. If you make hundreds from fucking $20, $30, you can lose those hundreds in the same way. Do you know what I mean? You can lose those hundreds in the same way, but then again, it really depends. It depends on your luck. It depends on the way you're executing. I know people who've made fucking $10,000, $20,000 from $100, but you know it takes time. It takes months, 4 to 5 months. It takes. Do you know what I mean? It takes time. It's not straightforward, right? The main thing is you don't gamble. You know, don't gamble. Don't act on impulse. That's the main thing. That's the most important thing, right? By the way, coming back to trading, if this candle forms bullish and the next candle goes down by a bit, breaks its own high, we could enter buys. We could, right? But this is just anticipating. I'm not going to trade because I trade maximum twice. Yeah, but it's good if you make money even from reinvest. Yeah, I mean, it depends, you know. देखो पता क्या main चीज the most important thing is risk management. ठीक है? Risk management. Wow, I've butchered the spelling yet again. Risk management is the most important thing when it comes to trading, right? क्योंकि you know a fact that you have to accept when you're trading is you're not going to be right 100% of the time. Okay? You're not going to be right 100% of the time. So you have to understand that there's going to be times and there's going to be trades where you're going to lose money. So you have to reduce or you know try to lose as less as you possibly can. You know, अगर मैं जब ट्रेड करता हूँ ना तो मैं एक स्पेसिफिक अमाउंट रिस्क करता हूँ.
अब मेरे ज़हन में ये है कि if I lose this money I don't have a problem, I don't have a problem. अब वो अमाउंट जो आप लूज कर रहे हो वो एक स्पेसिफिक परसेंटेज है आपके कैपिटल के, ठीक है. अब आप स्टार्ट करते हो फॉर एग्जांपल 1000 से, you can risk easily 10, 20, 30, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप इतना रिस्क कर सकते हो 10, 20, 30, ठीक है. अब ये है बहुत ही कंजर्वेटिव रिस्क, ठीक है. अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की खेलो प्रॉपर तो आप 50 रिस्क करते हो 5%, ठीक है. एंड दैट इज टॉप लाइन, टॉप लाइन. डोंट रिस्क मोर देन दैट, ठीक है. रिस्क मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अगर मैं ये जेन से ट्रेड करो कि आई एम गोना रिस्क $50, when it does come to losing, I'm going to try I'm going to try my best to lose less than $50. Okay? If I've risked $50, I'll try losing, at most, I'll try losing $20. That's amazing. I've risked 5%, I've lost only 2%. That's the main thing, that's the most important thing. मैं कल भी मैं जीता हूँ, मतलब जीता is a very strong word, right? Winning is a very strong word, but I had a winning trade yesterday. आज भी मेरी winning trade थी, ठीक है, लेकिन usually this would not happen. Usually I would have a losing trade. But that's totally fine. That's totally fine. कल फॉर एग्जाम्पल मैं कल ट्रेड करता हूँ और मैं कल लूज करता हूँ, बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कोई ओवर द टॉप कोई खास बात नहीं है, ठीक है. ये लूज करना बहुत ही नॉर्मल चीज़ है. मेन चीज़ है कि जब आप लूज करते हो आप कितने लूज करते हो, ठीक है. पर coming back to the sessions, ठीक है, I've taken like 10 minutes now. By the way, I'm fasting, that's why for some reason I'm knackered, right? Anyways, अब आपको समझ आ गई है कि किस सेशन को ट्रेड करना है. अब ये कि ट्रेड कैसे करना है, ठीक है, ट्रेड कैसे करना है. सबसे पहले बिलाल आप जाएंगे डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम. अब डेली टाइम फ्रेम पे 4 आवर पे 1 hour टाइम फ्रेम, 30 minutes, 50 minutes, 5 minutes, 1 minute. The only difference is the length or the period that the candle has been open for. In the 1 minute time frame, the candle only runs for a minute. ठीक है, देखो अब यहाँ पे टाइम आ रहा है ना सर. You've got 30 seconds now till the candle closes, right? And this candle started like 30 seconds ago, now 35, right? So each of these candles, they represent 1 minute. Now, if I go to 5 minutes, each of these candles, each one represents 5 minutes, right? If you go to 15-minute time frame, represents 15 minutes. If you go to 30-minute time frame, represents 30 minutes each candle. Then if you go to 1 hour time frame, represents 1 hour, 4 hours, 1 day, right? ठीक है. अब ये मंडे था, ये आज है. ये फ्राइडे था, ये थर्सडे था, ये वेंसडे था, ये ट्यूसडे था, ये मंडे था, ये पिछला हफ्ता है, ठीक है. फिर ये उससे पिछला हफ्ता है, ठीक है. फिर ये उससे, मतलब ऐसे चलता जाता है, ठीक है. और फिर आपके पास वीकली टाइम फ्रेम भी है, मंथली टाइम फ्रेम भी है, लेकिन वो मैं देखता नहीं हूँ, ठीक है. इतना मैं लॉन्ग टर्म ट्रेडर नहीं हूँ, मतलब सॉरी लॉन्ग टर्म गलत वर्ड है. मैं स्विंग ट्रेडर नहीं, ठीक है. स्विंग ट्रेडर उसको कहते हैं जो कि मल्टीपल डेज के लिए पोजीशन होल्ड करता है. मैं बस कुछ मिनट्स के लिए होल्ड करता हूँ. कैल्पर इंट्राडे ट्रेडिंग जो है ना, मैं वही करता हूँ. बहरहाल आपको समझ आ रही है अभी तक या फिर कोई मसला है, मुझे बता देना, ठीक है. एनीवेज, सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे, ठीक है. देखो याद रखो, जब ट्रेड लेते हैं ना, फॉर एग्जांपल लॉन्ग जाना, शॉर्ट जाना, ये दो पोजीशंस आपके पास, ठीक है. या तो आप लॉन्ग जा सकते हो कि हाँ भाई ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, तो मैं अपना जो स्टॉप लॉस है वो एक स्पेसिफिक परसेंटेज तक रख लेता हूँ. और लिटरली द ऑपोजिट इज शॉर्ट पोजीशंस, ठीक है. नीचे जाएगा तो प्रॉफिट होगा, तो मैं अपनी शॉर्ट पोजीशंस रख लेता हूँ. अब बेसिकली आपने जब लॉन्ग जाना है उसकी अपने कंडीशंस हैं, शॉर्ट जाओगे उसकी अपनी कंडीशंस हैं, ठीक है. Every setup has its own conditions. You have to look out for conditions being met, and only then you can execute on the positions.
So when you go in bullish, right? Under most circumstances, I will never take a long position, right? And let me write this down. Long is equal to buy, short is equal to sell, right? Right? Long is equal to buy, short is equal to sell. Okay? Okay, never mind. Right, so you can do a neutral color, isn't it? There we go. Long is buy, short is sell. Okay? ये long है, ये short. अब long conditions. ठीक है? Let me go further back. Let me show you how you close down on certain time frames first, and then I'll show you what conditions you have to look out for. You go to the daily time frame. You're looking at, what's it called? This is called price action, right? The way candle is moving. The previous daily candle was slightly bullish, right? Slightly bullish. Went up, came down. The current candle went up and is tanking right now. Okay? Going proper down. Okay? Then you go to the 4-hour time frame. You've got this support here. This is the support, right? आपके पास ये level है. ठीक है? What I'll do is I'll try. How do I fucking ठीक है? अच्छा जी. That's all done. Middle line, no need. There we go. Right? Bro, these fucking my neighbors are crazy, bro. Anyways, right? So you've got this support here, right? समझ आ रही है अभी तक? 4-hour time frame support. सबसे करीब जो resistance है वो ये है, ठीक है? अब जाएंगे 1-hour time frame पे. सबसे करीब support यही है, ठीक है? सबसे करीब resistance जो है ये है, ठीक है? अब मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, लेकिन देखो उसके साथ ही और लेवल्स हैं, तो मैं सबसे कन्वीनियंट लेवल चूज करूंगा कि चलो इसके ऊपर क्लोज हो तो मैं बाय कर सकता हूँ, ठीक है? क्योंकि जब भी कैंडल फॉर एग्जांपल इधर आती है ना, तो जो पीछे वाले लेवल्स हैं वो उसके साथ इंटरफेयर करते हैं हमेशा, ठीक है? देन यू गो टू द 30 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है? अब इसका इतना मसला नहीं है क्योंकि 1 आवर पे ये था ही नहीं, ठीक है? इसलिए अभी के लिए I'll just stick to this, ठीक है? And there you go. 30-minute time frame. Then you go to 15-minute time frame, और 15-minute time frame और 30-minute time frame की मैं एक बात बता दूं. देखो, usually you would prefer sticking to the 30-minute time frame. Why? क्योंकि 30-minute time frame strong confirmations होती हैं, ठीक है? जो 15-minute time frame है वो depend करता है. अगर if you have a lot of volume, you would prefer going with the 15-minute time frame because you might miss setups, right? And that's something you don't want, right? लेकिन if you go with the 30-minute time frame, confirmations strong है, ठीक है? मतलब आपको पता है कि ये more than likely है, मतलब 80 to 90% चांस है कि ये हो जाए अगर कोई सेटअप आपको नजर आ रहा है, ठीक है? जो मेरी ट्रेड थी वो भी उसी पे बेस्ड थी, लेकिन वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? ओके. अब दो टाइप्स की ट्रेडिंग है, ठीक है? एक है विद इन रेंज. रेंज कहते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ये जो एरिया ना, ये सारा एरिया जो, इसको रेंज कहते हैं, ठीक है? ये सारा का सारा ये जो है ना, ये सारी की सारी रेंज है, ठीक है? ये सारी की सारी रेंज है. अब
दो टाइप्स की ट्रेड है, इस रेंज के अंदर और इस रेंज से ब्रेकआउट की ट्रेड्स, ठीक है, ब्रेकआउट ट्रेड्स। अब बिलाल अभी तक समझ आ रही है तो बता देना, नहीं आई तो मतलब क्वेश्चन करना है भाई, ठीक है। राइट, सो किस कंडीशन में हम पहले बताते हैं कि इन रेंज ट्रेड करेंगे। देखो, मैं कभी भी लॉन्ग पोजीशन नहीं लूंगा जब तक पिछली कैंडल बुलिश नहीं थी, कभी भी शॉर्ट पोजीशन नहीं लूंगा जब तक पिछली कैंडल शॉर्ट नहीं थी, ठीक है। तो इन केस मैंने बाय पोजीशन लेनी है, पिछली कैंडल जो है बुलिश हो, ठीक है। अगर पिछली कैंडल बुलिश नहीं है तो मेरा मतलब मैं बिल्कुल भी बाय ट्रेड नहीं लूंगा, बिकॉज इट्स वे टू रिस्की फॉर मी, यू नो आई मीन। अगर अगर पिछली वाली ऐसे फॉर्म हुई है तो चांस है, काफ़ी ज़्यादा चांस है कि पिछली वाली ऐसे फॉर्म हो और मे बी ये पूरी रेंज जो है फिल कर दे, ठीक है। अब लिटरली द ऑपोजिट, वेट, लिटरली द ऑपोजिट इज, से फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक आई है, रेजिस्टेंस पे फॉर्म हुई है बेरिश कैंडल, ठीक है, और अगली जो है ऐसे फॉर्म हुई है, ठीक है। अब ये सर्टेन कंडीशंस है, ऑब्वियसली इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं है, देखो, लेकिन देखो, राइट, सो ठीक है, मतलब अगली कैंडल जो है ऐसे ऊपर जाने की उसने कोशिश की लेकिन वापस अंदर रेंज में क्लोज हुई है, ठीक है। और फिर अगली जो है मे बी वो थोड़ी सी गई है, इस तरह से ऊपर गई है लेकिन पिछले हाई को ब्रेक नहीं किया और फिर नीचे आके इस लेवल को ब्रेक करके नीचे गई है, ठीक है। अब ये एक सिनेरियो है, इसी का लिटरली ऑपोजिट जो है लॉन्ग के लिए, ठीक है। होपफुली ये समझ आई है। अब मैं बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने ये मूव मिस कर दिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल कैंडल ऐसे फॉर्म हुई है, ठीक है, कैंडल इस तरह से फॉर्म हुई है, ठीक है, चलो थोड़ी सी उसकी ये भी है, ठीक है, अच्छी कैंडल फॉर्म हुई है, ठीक है। अगली जो है ऐसे फॉर्म होके बीच में आके फॉर्म हो गया, बंद हो गया और नेक्स्ट कैंडल ओपन है, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल मतलब कभी ऐसे जा रही है कभी ऐसे जा रही है, मतलब आपको नहीं पता, ऐसे ऐसे हो रही है, आपको नहीं पता कि अब क्या करना है। देखो, बेस्ट केस ये है कि आप वेट करें, आप किसी सेटअप का मतलब फॉर्म होने का वेट करें। जैसे अब देखें ना, ये वाली यहाँ पर क्लोज हुई है ना, ऐसे ये वाली ऐसे क्लोज हुई है, यहाँ पे एक प्रॉपर मतलब रेंज हुई है, फिर ये ऊपर गई है, आगे से रिजेक्शन फॉर्म हुई है, फिर जब उसने लो को ब्रेक किया तो फिर यू कैन एंटर फॉर शॉर्ट पोजीशन, ठीक है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, यू नीड टू वेट फॉर अ सेटअप टू फॉर्म बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। in this case, if this has already happened, I would say just wait, just wait. अब आप मतलब लेट हो गए हैं और अब आगे कैंडल ऐसे चली गया है, चलो कुछ नहीं होता, ठीक है। मूव्स हर दिन नए मूव्स होते हैं, ठीक है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन में मतलब मूव हो ही ना कोई अच्छा सा, ठीक है। गोल्ड जो है हमेशा आपको मूव देता है, हमेशा हर दिन आपको अपॉर्चुनिटीज देता है। कुछ दिन आते हैं कि अपॉर्चुनिटीज आपको नहीं मिलती, तो मतलब इतना बड़ा मसला नहीं है। कुछ होते हैं नॉन ट्रेडिंग डेज, बस आप स्किप कर दें वो, ठीक है। अपने पेशेंस जो है रखना है और आपने जंप इन नहीं करना पोजीशन साइजेस के साथ, ठीक है। आपकी सबसे ज़रूरी चीज़ ये है। बहरहाल देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। अभी अभी सेल्स मैं नहीं लूँगा, बायज मैं तब ले सकता हूँ अगर ये कैंडल इनके ऊपर क्लोज होती है, ठीक है। शीश आई एम स्लीपी बट एनीवेज, उसी का ऑपोजिट इन रेंज ट्रेडिंग। आपको इन रेंज ट्रेडिंग फक मी ब्रो, I'm totally fucking knackered। आपको इन रेंज जो ट्रेडिंग है वो ये समझ आई है या फिर आपको मतलब कोई है क्वेश्चंस वगैरह हैं ऐसे वैसे, मुझे बताना, फिर वी कैन ट्राई मूविंग ऑन। टू मच टू डाइजेस्ट राइट नाउ, आई नो, आई थिंक इसलिए मुझे ब्रेकआउट की तरफ मूव नहीं करना चाहिए, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। कैंडल्स का स्ट्रक्चर और इन रेंज ट्रेडिंग जो है, ठीक है। जो अगली स्ट्रीम है ना, उसमें
मैं आपको पहले बताऊंगा कि आपने अपना अकाउंट कैसे बनाना है, ठीक है, और डिपॉजिट वगैरह का क्या सीन है, और आपने कैसे मनी ट्रांसफ़र करनी है, ठीक है। वो आपकी डिपॉजिट आपकी अपनी मर्ज़ी है। आपको मैं बताऊंगा कि ब्रोकर आप कौन सा चूज़ कर सकते हो, कौन सा नहीं चूज़ करना आपने। मतलब कुछ होते हैं ब्रोकर्स जो कि फ़ीस बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। बेस्ट ब्रोकर एक्सनेस है, पर्सनली मैं भी वो यूज़ करता हूँ, लेकिन डोमिनियन मार्केट्स भी है, राजा बैंक्स का अपना ब्रोकर है, काफ़ी अच्छा है। बस ये उसमें डिपॉजिट मिनिमम डिपॉजिट्स हैं, फिर वो आपको थोड़ा सा मसला बनेगा। एक्सनेस में आई बिलीव 10 है, इतना नहीं है, सिर्फ 10 ही है। तो ये बस इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। द मेन थिंग इज यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, ठीक है, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। और एक दिन में आप सारी ट्रेडिंग नहीं सीख जाएंगे, लेकिन नेक्स्ट सेशन में, जो कि अगर कल होता है, इफ नॉट मे बी द डे आफ्टर और मे बी ऑन फ्राइडे, लेकिन जब भी होता है आई विल लेट यू नो, और वी कैन ट्राई वर्किंग ऑन द अकाउंट स्ट्रक्चर, the other strategies, impulse entries. Impulse entries is one of the best strategy, और by the way मैंने उसी से पैसे बनाए आज, लेकिन anyways, um, all of these strategies very very important strategies, लेकिन yeah, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम हम कंटिन्यू करते हैं। लेकिन बहरहाल बिग डब्स, आज अच्छी ट्रेड गई है, मैं मतलब ठीक है, मैं खुश हूँ अपनी ट्रेड के साथ। और सही है, मुझे मारो, ठीक है, ख्याल रखो। सिंगर, कोई गाने वगैरह करो यार, कम ऑन, गाने रिलीज करो दे बहरहाल ख्याल